लेज़र डेंटिस्ट्री क्या करता है कि आपके जो प्रिसाइज प्रोसीजर्स हैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स में, जैसे हम सपोज आप क्राउन लेंथनिंग कर रहे हैं, क्राउन कटिंग कर रहे हैं, आपकी जो लेवल कॉन्टूर्स को आप शेप कर सकते हैं। पिम्स की मैंने बात की ट्रेनिंग में, तो आई यूज टू गिव देम द ऑप्शन कि यार आई कैन डू योर वर्क इन 2 ways। वन इज स्कैल्पल जो नॉर्मली आप करते हैं, द अदर इज द लेज़र। सो उस वक्त लोगों के ज़हन में लेज़र का कॉन्सेप्ट था लाइक अ रेडियोथेरेपी, यू नो। अच्छा। सो दे यूज टू गेट दैट बुक्ड आउट कि यार हम कोई रेडिएशन थेरेपी, कोई कैंसर की Yep. बात तो नहीं करें। बिल्कुल, आई टू बिल्कुल, एजुकेट देम, नो इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेडियोथेरेपी। Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Dental News Podcast. This is your host Dr. Mariam Yusuf. Ladies and gentlemen, whenever we talk about tech-driven dentistry, we talk about laser dentistry day in and day out. The person that we have today is a diplomat at the American Board of Laser Surgery. He is also the assistant director at American Board of Laser Surgery, but his description does not end here. He is a member of World Federation of Laser Dentistry. He is also a consultant of oral maxillofacial surgery and an excellent cosmetic surgeon. We have Dr. Waqas Javed Malik with us. Sir, thank you so much for taking out the time. How are you doing today? I'm great. I'm very happy to be here, and I'm very pleased happy meet to have you. Honestly, Yeah. I'm a little nervous right now because I have never sat face to face with the CEO of one of the biggest aesthetic institutions, perhaps I can say in the world, now that you have been doing so many international trips and international courses as well. But we'll get into that in proper detail. So, Dr. Waqas, you've been associated with Face Academy for how long now? It's been about 15 years now. Oh, okay. Yeah. So like over a decade easily. Yeah, over so, a decade easily. And most of the people who know you and Dr. Kurutalan as well, they know you through Face Academy mostly. Yeah. But what I want to understand is, where did this all begin from, and did you always have an entrepreneurial mindset, or did this like occur to you at some point down your career? So if I want to go at the beginning, I can go way back at the time of my BDS. Okay. You know? So that's also an interesting story that I gave my exams for BDS entrance exam, and I got admission at Rifa International University, All Islamabad. right, you're from Yeah. Rifa, all right. Yeah, but like it was in the 6 months of my first year that I got a call one day from a letter. In fact, a postman came with a letter from Dhaka University. Okay. Yeah, I had applied for that university admission about 7 months back. I forgot about that. Right. So a letter came randomly that you got admission there, and you have to report within 15 days. ठीक है. So that was surprising कि यार 6 महीने हो गए हैं, फ्रेंड्स बन चुके हैं, सेशन चल रहा है, वो सही. शुरू की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आप एक नई जगह जाके ज्वाइन करें. तो आई हैड अ डिस्कशन विद माय फादर कि यार क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. इट वाज टोटली आउट ऑफ ब्लू फॉर मी कि बांग्लादेश Yeah, exactly. ऑप्शंस में भी नहीं आता नॉर्मली. But you must have applied कि चलें कोई तो option available हो. because it was actually a program by HEC. अच्छा. Yeah, it's a program. Even now it is there. Okay. It's a SARC culture exchange program. Oh, Every year, all right. one student like goes from Pakistan to there, and one of their students Right. comes here. Similar programs exist with Sri Lanka as well, right? Exactly. So I had applied there, but उसके बाद मैं भूल गया कि यार कुछ किया था. So when I got the वो admission, नहीं भूले लेकिन. Yeah. So my father said, "It's your choice. You want to go, you can go." And All right. I thought, okay, let's go. Let's take it. And so I Okay. left Rifa and I joined Dhaka University. So that was the first thing in the beginning. Just make it was one thing that I never thought of, and I had choice to do that, and it was a good choice. So you were like, why not do something different? Like, Exactly. पढ़ लिया पाकिस्तान में, इंटर भी कर लिया, मैट्रिक भी कर लिया, अब बिल्कुल, क्यों डिग्री कहीं तो और वो से करते 4 हैं? years जो थे, that actually gave me a lot of exposure. यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टूडेंट्स थे, बाकी जगहों से स्टूडेंट्स बहुत से आए Okay. होते हैं, तो इट broaden your horizon. Absolutely. आप एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, बट वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें और भी नज़र आती हैं आपको. सो आई केम बैक आफ्टर ग्रेजुएशन. हाउस जॉब मैंने दोबारा पाकिस्तान में की, और हाउस जॉब के बाद अगेन आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ नया करना है. Why didn't you plan on like staying there long term? बिकॉज फैमिली इज हियर, और बाकी उस तरह से लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था सही. कि वहाँ पे भी रुका वो जाए. बस एक Although- अंडरग्रेजुएट एक्सपोजर चाहिए था आपको, and you got लाइक that. ग्रेजुएट करने के बाद वहाँ का लाइसेंस वगैरह मिल जाता है आपको, जैसे PMDC यहाँ पे देती है, तो Yeah. वहाँ पे लाइसेंस आई हैड दैट, बट आई केम बैक. सो लाइक अबाउट हाउस जॉब के 2 years के अंदर अंदर आई गॉट अ प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम एक चल रहा था अमेरिकन बोर्ड का. So Okay. yeah, so it was the 2 years diplomat program from the American board. Or I again had a conversation with my father कि should I go for it or not, because उस टाइम पे भी मैंने कुछ सीनियर्स को कंसल्ट किया, तो दे सेड कि यार we don't know, मतलब लेजर्स
क्या करोगे एग्जैक्टली मैं इस सवाल पे हाँ। वैसे आने भी वाली थी कि आपने उस टाइम पे लेजर डेंटिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन चूज करी व्हेन पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट लेजर डेंटिस्ट्री एग्जैक्टली सो where you were saying Exactly. So, like when I considered one of my few of my colleagues, seniors, कि सर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो everyone was like छोड़ो यार क्या lasers में exactly क्या करोगे yeah to the क्या है best of नहीं their knowledge they gave you जी that हाँ, answer बिल्कुल ऐसे ही. But even then, I said I'll go. So I joined there. Okay. Yeah, and it was again a good choice. 2 years program था मेरा, उसमें हमारी faculty international थी, कुछ Europeans थे, कुछ Americans थे, so they had a very thorough knowledge, in-depth knowledge. और उस टाइम पे देयर वाज अनदर प्रोग्राम जो जर्मनी कंडक्ट करवा रहा था, बट दैट वाज अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम काइंड ऑफ, यू नो, कि देयर वाज वन बिग कंपनी जो उस प्रोग्राम की सारी फंडामेंटल लॉजिस्टिक्स देती थी, और उनकी जो अप्रोच थी दैट वाज मोर फोकस्ड ऑन कि वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बेस पे आप नॉलेज right so were you enrolled in that program I as did well not go for that. Went for the American board program. right so you had to be physically present in US for that Yeah, I had to be physically present. So I went there, completed my program, उसके सारे cases वगैरह किए, फिर उसके बाद नेशनल बोर्ड्स भी मैंने साथ साथ दिए, अमेरिकन बोर्ड के नेशनल बोर्ड वो किए, all right and then again I came back. so you gave INBD as well Yeah, and INBD was later 2021 में I think start अच्छा, हुआ. okay, okay. उस टाइम पे NBD 1 and 2 था. सही So I gave 1 and 2 both. अच्छा ओके तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि when वैसे तो मुझे अब तक ये समझ में आया कि you are somebody who likes to take the unusual route because जब आपका रिफा में हुआ था you were like नहीं मैं ढाका जा रहा हूँ, जब किसी को लेज़र का पता नहीं था you were like नहीं मैं लेज़र में जा रहा हूँ, so that's incredible. So tell me about your experience in US for those 2 years. What was it like? So उसमें again it's international program था, तो उसमें पाकिस्तान से I was the only one. We had students from कुछ अरब कंट्री से थे, Okay. कुछ even there was one from अभी जो Israel, even one lady from there, कुछ यूरोप से थे, और it was a mixed batch, you know. All right, yeah. और उसमें कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल अर्ली कैरियर लेवल पे थे, कुछ मिड प्रोफेशनल लेवल पे थे. That's the thing about doing fellowships and joining boards, right? Because you will see somebody as young as, for example, yourself, because you were a recent graduate, Yeah, and then I somebody was. who would have like a decade worth of experience would be there too. Exactly. So I was very interested in that. उसमें जो हमारे mentors थे, they were especially pointing out कि यार Dr. Waqas is doing something different. All right. आप लोग थोड़ा effort put up करो, go Flex. up to his level. So I was doing, I was motivated more maybe. That's incredible. So this was a good experience. फिर वापस आके again I joined the maxillofacial surgery program, MDS. ठीक है, Yeah. ठीक है. So that Why this sudden shift? Coming back to Pakistan, I felt the need कि यार एक आपके साथ kind of, you know, एक specialization degree is needed. I agree. You know, but I actually came back और यहाँ पे मैंने lasers बताना शुरू किया कि यार this is something new. लोग बाहर तो बहुत पहले से कर रहे हैं, पाकिस्तान में something new, you know. So one of the pioneer के तौर पे मैंने बताना शुरू किया, तो acceptance में काफ़ी problem आता था. Right. कि यार एक young बच्चा आके ये बता रहा है, और ये एक मसला है ना, जी हाँ, मेन बिल्कुल, मसला तो ये है कि भाई बिल्कुल, आप जो है वो 4.5 साल आपको हुए ग्रेजुएट हुए और आप हमें सिखा रहे हैं. So how come you are telling us things that we should be telling you, you know? Yeah. तो लेकिन उससे मुझे लगा कि I should at least gain something more specialty होनी चाहिए. फिर maxillofacial join किया, it was a good opportunity. PIMS में मैंने किया, और उसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा थीसिस होता है. सो थीसिस में I again went an unconventional route. कि नॉर्मली हमारी सर्जिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम ट्रॉमा कर रहे हैं, तो ट्रॉमा पे कोई थीसिस लिख रहे हैं आप, या आप कोई टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे लिख रहे हैं आप, या ऐसे कोई लिख रहे हैं, इन्फेक्शंस पे लिख रहे हैं. सही है. I said no, I want to do lasers in surgery. Incredible. I'm very glad you did. Yeah, I did. Because मैं पूछने वाली थी how did you implement what you learned in US and OMFS? So this is the answer. Exactly. So supervisor question था, बेटा ये this is a government institute, यहाँ पे हमारे पास funding नहीं होती. और किसी को समझ भी नहीं आएगा. Yeah, I said I don't need any funding. I'll bring my own machine, my own equipments, but I want to do the research. आप मुझे approval दे दें. What was that research like exactly? It was like a comparative study. We were comparing a scalpel with the diode laser. All right. So we were comparing which one has a better bleeding control. Dr. Waqas, that sounds incredible. Yeah. So that was again a 2-year study. तो उसमें मैंने PIMS के अंदर I took my own, used to take my own machine, patient performance करने, procedures करने. So I applied my knowledge there as well. सही. Yeah. So how did your supervisors usually react to you as a resident wanting to try something new? it was difficult. Difficult. I had my Do you think your supervisors had the kind of expertise that you were able to have by that time even? Not in lasers, no. They were experts in their own, of course. You know, they are, but not in lasers. Yeah. Absolutely. Yeah. Okay, so then by the time you were done with OMFS, what did the career trajectory look like for you then? मतलब,
अच्छा इस पे ना आई वॉन्ट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यूजली वट यूजली लाइक द अंडरस्टैंडिंग इज दैट आफ्टर डूइंग योर FCPS and OMFS there are not as many opportunities as consultant that are as rewarding for somebody who gave in so much blood and sweat to OMFS. So what do you have to comment on that? I would say you're partly right. Reason being, maxillofacial surgery, hardcore maxillofacial surgery, it's still more laborious, less rewarding. Majority of the population that is coming to us with different pathologies, they are not the one who are gaining some expensive treatments. They're coming with some serious diseases, certain pathologies. So you have to give them the best, but don't expect too much out of it. Right. Or out there, there is a shift in this regime that they've got a good way of screening initially. Diseases don't go to that worst stage, so early stage पे आप मैनेज कर लेते हैं. लेकिन आप तो पिम्स में थे और वहाँ तो दैट्स अ टर्शरी केयर सेटअप और आई थिंक आई कैन सेफली कंपेयर इट टू कराचीज जिना एज वेल, जिना और सिविल. तो अ लॉट ऑफ पेशेंट फ्लो एंड अ लॉट ऑफ वर्कलोड. एग्जैक्टली, इट टू मच. मतलब उसमें वी यूज्ड टू फील लाइक इट इज ओवरलोडेड ऑल द टाइम. ट्रॉमा जितना आता है तो लाइक पंजाब से ले लें या कश्मीर से ले लें, इवन KP से बहुत सारे जो हमारे मेजॉरिटी केसेस थे, दे वर ऑल रेफर्ड टू पिम्स. और पिम्स की कैपेसिटी तो उतनी थी, बट यू हैड टू मैनेज वन वे और वो एक डॉक्टर की कैपेसिटी है जो वो ओवर एस्टिमेट करते हैं. एग्जैक्टली. तो वैसे योर नॉलेज इन oral maxillofacial surgery must have massively helped you when you got into aesthetics, right? Because like you understood the anatomy and every other thing, all the systems and functions and physiology better than somebody who just knows about skin. So when did you transition from OMFS to then cosmetic and aesthetic surgery? Achha, this was actually, I would say, going parallel. All right. During my laser dentistry program, I had one of my supervisors. She is from Greece. All right. And she is a PhD in periodontology and in regenerative dentistry. Dr. Cleopatra. So she was giving us lectures, and alongside she used to give us some cases that ये मैंने कुछ केस किए इम्प्लांट के साथ, मैंने कुछ regenerative aspect में PRP PRGF उस तरह किया. तो दैट एक्चुअली गिव मी द आइडिया कि यार इसके साथ ये भी हो सकता है. शी वॉज एन MSc इन lasers, a PhD in periodontology, and also in regenerative medicine. Incredible. Yeah. And she's still like a good mentor to me. So this is where your motivation of having like 5 specializations come from. Not 5, but I wanted to do something like more in the future thing, that's coming up. आप कन्वेंशनल में हमारे सीनियर्स बहुत काम कर चुके हैं. आई कैन नॉट इन्वेंट अ न्यू टेक्निक टुडे कि यार विजडम टूथ निकालने की कोई मैजिकल वे में अब रूट कैनाल ऐसे होगी, अब ऐसे कि आई कांट डू दैट. वो फंडामेंटल्स सेट हो चुके हैं. सो व्हाट आई यूज्ड टू थिंक यार कुछ ऐसा करना चाहिए जो इसको और इम्प्रूव कर सके, इस टेक्निक को या पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको और बेहतर कर सकें. सो दिस गिव मी द आइडिया. लेजर्स वर्क गुड इन दैट. aesthetics again another thing जिसमें knowing the anatomy and all, आपने बोन तक सब कुछ देखा हुआ है. अब उसके in between जो आप कर सकते हैं, you have the necessary knowledge to do that. Right. Yeah. So like when did you actually establish Face Academy? It was in 2015, 14 or 15, yeah. Okay. Yeah, so if it was around that time, and your residency must have ended not that long ago before this? No, I joined the residency later in 17. Because at that time I was in US and then I just came back. I did my lasers first and I joined the maxillofacial later. So you took a very practical approach where you wanted to start something of your own as well, but because you wanted to secure a proper position if you had to live in Pakistan long term, so you had like a specialization program going on. That makes a lot of sense. I think anybody watching can actually learn a lesson or two, because usually ये होता है कि when people want to get into aesthetic dentistry, they want to get into it because the rest of the dentistry seems either too hard or they feel like they won't be able to develop skill set, right? And also because aesthetic dentistry is, and I would really like for us to debunk that myth in this discussion as well. People think that it is perhaps going to be easier in terms of performance as opposed to what conventional dental procedures are like. What do you have to comment on that? Well, you're right. It's not easier actually. It's more. It needs more precise planning. Absolutely. It's something that a person is coming to you with a conscious effort. कि यार, I want this specific look, and you don't have the chance of error. कि यार चलो, 19-20 वाली एक बात आप करते हैं ना कि यार हाँ ये हो जाएगा acceptable. No, you need to be spot on. Right. This is what you want, and this is what we can give you. So you need more effort into that thing. Absolutely. Or yes, that's how you Did you find laser dentistry, any sort of incorporation of laser dentistry into facial aesthetics as well? Yeah, I did.
यू नो बिकॉज हम जब फेस की बात करते हैं ना तो आई कैन नाउ कंपेयर कि यार आप एक पेशेंट को बताते हैं कि योर टूथ इज़ हर्टिंग, सो वी आर एडवाइजिंग यू फिलिंग करवा लें, रूट कनाल करवा लें, एंड यू आर एडवाइजिंग द पर्सन कि यार आपके फेस को हम ऐसा ग्लो वाला कोई ट्रीटमेंट देते हैं, सो द फर्स्ट चॉइस द पर्सन विल गो हाँ यार मुझे जो दिखने में अच्छा लग जो रहा है, ग्लो आ रहा है ना वो चाहिए, पेन के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा. You know, I compare every single day. Right. तो उसमें I always guide them कि यार if you are wanting to have a harmony या आपके अपनी smile अच्छी करना चाहिए, not just your outer look, your teeth also show through. जब smile करते हो, बात करते हो, right. तो you need to work on both the things. So laser dentistry क्या करता है कि आपके जो precise procedures हैं, you know, aesthetic procedures में जैसे हम suppose आप crown lengthening कर रहे हैं, crown cutting कर रहे हैं, आपकी gingival contours को आप shape कर सकते हैं, lips को आप उसके natural pink color restore कर सकते हैं. Right. So there are many things that lasers help in aesthetics. It's Sir, helpful. अगर we like break it down, explaining to explaining to a 5-year-old वाला अगर हम करें, तो can you explain why exactly is using laser as opposed to a regular blade is beneficial in terms of healing and pain as well? Exactly. So simply put, अगर आप lasers की बात करें तो it is more precise. You know, laser की एक special property है कि this can actually cut selectively. You know, Okay. जब हम एज अ सर्जन बात करते हैं तो स्कैल्पल से आप कट करते हैं, इट कैन कट द सॉफ्ट टिश्यूज ऑल द वे सॉफ्ट Yep. टिश्यूज, बट अब लेजर से कट करते हैं डिफरेंशिएट्स के यार यहाँ पे सपोज द टिश्यू इज मिकोजा, यहाँ से मसल स्टार्ट हो गया, यहाँ से बोन आ गई है, Right. दैट इज वन थिंग प्रोफेशनल. अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो यू कैन से मोर प्रिसाइज, ब्लीडिंग बिल्कुल इसमें नहीं है, पेन इट्स वेरी मिनिमल, ठीक है, हीलिंग इज वेरी क्विक, ठीक हो गया, एंड देन द पोस्ट ऑफ केयर में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है बिकॉज लेजर व्हेन इट कट्स इट इज स्टेराइल. The light, it is bactericidal in nature. तो उसमें जो इन्फेक्शन के चांसेस आपके होते हैं वो they are minimal. How do you think, how have you observed patients reacting to this treatment option, especially because nowadays patients want to be very well versed in what the treatment is going to be like. हम तो 3 घंटे की ChatGPT से conversation करके आए हैं और these are the pros and cons of this procedure, right? Yeah. So like what have you observed in terms of patients coming across this new concept of dentistry perhaps in lasers? How do they react to this? अच्छा, इसमें इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अगेन. जब अब मैंने शुरू में स्टार्ट किया पिम्स की, मैंने बात की ट्रेनिंग में, तो आई यूज टू गिव देम द ऑप्शन कि यार आई कैन डू योर वर्क इन 2 ways. वन इज स्कैल्पल जो नॉर्मली आप करते हैं, द अदर इज द लेजर. सो उस वक्त लोगों के जहन में लेजर का कॉन्सेप्ट था लाइक अ रेडियोथेरेपी, यू नो. अच्छा. सो दे यूज्ड टू गेट दैट स्पूक्ड आउट कि यार हम कोई रेडिएशन थेरेपी, कोई कैंसर की बात तो नहीं कर रहे. बिल्कुल, आई हैव टू बिल्कुल, एजुकेट देम, नो इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेडियोथेरेपी. दिस इज जस्ट लाइक कटिंग टूल, बट यू नो द मैकेनिज्म इज बाय द लाइट. तो आपको कोई सीरियस वो प्रॉब्लम नहीं. एजुकेशन से उससे मुझे आइडिया हुआ कि पेशेंट के क्वेश्चंस कॉमन क्या आते हैं. सही. ठीक है. और लाइकवाइज अभी भी जो क्लिनिक पे आते हैं हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं, तो आई ऑलवेज शो देम द एविडेंस कि यार दिस इज व्हाट वी डू. यू नो, आप कन्वेंशनली देख चुके हैं, आपने पहले भी ट्रीटमेंट करवाया होगा, आई विल डू इट दिस वे, और उसके ये रिजल्ट्स आते हैं. बट इम्प्रूवमेंट और आपके लिए क्या बेहतर है कि आपके रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है, जो प्रोडिक्टेबिलिटी है कि यार मैं कर रहा हूँ तो इसके डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा. दैट यू विल डेफिनेटली. Sir, I'm very glad you touched base on one of the myths that you shared that patients have, because another one that I have come across is that patients often feel that there are going to be, and educated patients, they feel that there might be some changes in their skin or mucosa sometime in the future if they go towards laser. So is that true in any way? No, it's not. अगर इफ इट्स अ नॉर्मल मिकोजा, जैसे मैंने पहले कहा, लेजर इज अ लाइट. यू नो, आप सनलाइट में भी जाते हैं तो सनलाइट में आप सन ब्लॉक लगाते हैं. सन ब्लॉक पे पड़ा होगा, उस पर यूवी प्रोटेक्शन फैक्टर होता है. इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट द विजिबल लाइट और एनीथिंग एल्स. हम इंफ्रारेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजिबल से प्रॉब्लम नहीं है. यूवी इज द थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न. तो जितने लेजर्स हैं दे आर आइदर विजिबल लेजर्स और द इंफ्रारेड लेजर्स. ठीक है. सो दे देमसेल्व्स डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू कॉज अ कैंसर या कोई ऐसा पैथोलॉजी. अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी है तो उसको लेजर जरूर अफेक्ट कर सकता है. वो तो इंसिजन भी करता है. कर सकता है, यस, ठीक है, बट ऑन इट्स ओन इट विल नॉट अफेक्ट. Right. I'm very glad that we clarified that, and I hope कि क्योंकि सर लेजर डेंटिस्ट्री तो फिर चलें बहुत की बात है, आगे की बात है. लेजर हेयर रिमूवल पे भी जो है ना वो खदशात होते हैं कि नहीं खुदा ना खास्ता आगे जाके कोई स्किन में मसला ना हो जाए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट इट जस्ट बिकॉज it you know sounds like something that is related to oncology and cancer does not mean these two are the same things. Exactly. So let's talk a little bit about
specializing in the field of lasers, right? आपने तो उस time पे you took a very bold step and you wanted to enhance your education in laser dentistry, and even though you were in a very different field at OMFS, you were like, I will do both of them together, I will incorporate them. So I think that was that's really great. But I want to understand why would a young dentist today, why should they be motivated towards going into laser dentistry, especially when our undergraduate curriculum is very like क्या बोल सकते हैं, there is no presence of laser dentistry in our curriculum at the moment. अच्छा, अगर आप आज पूछते हैं ना 2026 में, तो आई वुड से कि पहले एट माई टाइम इट वाज मोर ऑफ अ चॉइस कि आप करना चाहते नहीं करना चाहते. टुडे इट्स मोर ऑफ अ नेसेसिटी. यू नो, यू हैव ग्रेजुएटेड आउट, हर साल सपोज 1000 ग्रेजुएट्स हो रहे हैं. सो हाउ वुड यू स्टैंड आउट ऑफ 1000? So you need to have something special skill set जो आपको बताए कि हाँ यार, डॉक्टर मरियम is practicing and she has got this extra set of skills. तो लेजर्स आपका एक तो ये है कि आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में या क्लिनिकल एक्सेलेंस में इट्स अ नॉर्मल टूल. डेली यूज़ में आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप इसको रखा होता है. व्हेन यू नीड इट, यू टेक इट आउट एंड यूज़ इट, पुट इट बैक. राइट. सो यहाँ पे मैं वही चीज़ चाहता हूँ, हमारे फेस को एस्टेब्लिश करने का पर्पस भी ये था कि वो चीज़ें जो हम यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाके देखने फैसिनेट होते हैं, व्हाई नॉट वी डू इट हियर. आप हर डेंटिस्ट को बुलाएं, उनको एजुकेट करता हूँ मैं कि आप लेजर इंडस्ट्री इंकॉर्पोरेट करें. इट विल इम्प्रूव योर रिजल्ट्स. यू नो, हम रूट नाल करते हैं, बहुत सारे केसेस में फेलियर हो जाता है. या ठीक है. सो लेजर सॉल्व दैट प्रॉब्लम बिकॉज इट्स सच, इसकी जो रीच कह लें, ठीक है, इट इज़ सो गुड कि आपका जो इन्फेक्शन है दैट डेफिनेटली गेट्स improved, gets eradicated. I've done research on that as well. Okay. Yeah. So second thing is कि patient is always looking for more comfortable procedure कि यार pain ना हो. Oh, that is very important. Absolutely. हमारी तो सारी marketing ही pain free root के नाल, pain free procedures. या बहुत सारे लोग needles से fear होता है कि हमें इंजेक्शन ना लगाएं. तो लेजर बहुत सारी ऐसी चीज़ों में या तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एनेस्थीसिया की, या बहुत मिनिमल नीड होती है एनेस्थीसिया की. Okay. और एक और बहुत मज़े का जो पार्ट मैं प्रैक्टिस में डेली फील करता हूँ इज द ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पीड्स के पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं. Yes, definitely those. वो आपको याद होगा कि बच्चों को समझाना कि बेटा ये ब्रश है, हम आपकी टीथ को मैं तो देखती करेंगे. नहीं हूँ पीड्स पेशेंट की तरफ. So it's quite a task, you know. Absolutely. और एक बच्चे को सिर्फ ये बताना कि बेटा दिस इज अ लाइट या लेजर लाइट और हम आपके टीथ को चेक करेंगे इज एज सिंपल एज टेलिंग हिम ABC. Right, that makes so much sense. हर टॉय के अंदर लेजर लाइट मौजूद है. Because otherwise it is so hard to reason with them, right? And the more complicated the conversation you make, the more likely they are to absolutely run out of your. Exactly. So I prefer कि मैं first visit में लेजर लाइट उनको दिखा देता हूँ कि बेटा this is a light आप टॉयज में यूज करते हो, so this is a doctor's laser light and I'm going to check your teeth, कहाँ पे कुछ germs हैं, कहाँ उसको ठीक करना है, कहाँ clean करना है, and they are very happily okay check. Right. और उसके मुकाबले में अगर वो मिरर लेके जाऊँ तो मिरर में मुझे और अगर उन्होंने नीडल देख भी ली तो बस फिर नहीं आने वो आपके पास. So ये वो बेनिफिट्स हैं, यू नो. आप प्रैक्टिस के एस्पेक्ट में खुद आप एवेलुएट कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही होती हैं. Absolutely. फिर पेशेंट की जो कंप्लायंस इंप्रूव होती है. अगर पेन फ्री आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट का डाउन टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम इज मोर लाइकली टू कम बैक टू यू. यू नो, एक वर्स्ट एक्सपीरियंस वो 10 लोगों को बता रहा होता है कि यार हाँ इनके पास नहीं जाना. Right. और आपका वो एक्सपीरियंस जैसे आपने एक डिफरेंट चीज़ दी है, इट मोर लाइक टू गिव यू मोर ग्रोथ. Right, I completely agree. अच्छा, so now that we have discussed why it is important to learn laser dentistry, let's also talk about where to learn it from, right? So you mentioned that the purpose of establishing this academy, Face Academy, was because you wanted this to not remain an underestimated part of dentistry, and you wanted to like explain and expose it to more people. Yeah. So can you explain what exactly goes on at Face Academy and what kind of courses do you have, etc.? Yeah, so the Face basically it is offering multiple courses. Okay. You know, we are having courses in laser dentistry, in cosmetic dentistry, okay, in facial aesthetics. Even we have got specialized courses for plastic surgeon, like hair transplants, specialized courses for gynecologists. So for each procedure we have got I would say the best in practice. You know, if I'm doing the laser dentistry, I myself am there. For that, I've got international faculty with me as well who are practicing laser dentistry. Oh, so the moderators are actually coming from abroad. Yeah, so whenever they have a session, they come, they travel, they give their own trainings here as well. Likewise in facial aesthetics, we've got consultants. So like it's like attending a lecture in some university abroad, except not having to go abroad. Exactly. Right. Exactly put. That's how it is. And laser dentistry, another important factor is कि abroad जब हम जाते हैं, when I was there myself, the biggest hindrance was patient पे आप काम नहीं कर सकते.
You know, you need to have the बिल्कुल license. बिल्कुल, इतनी दूर खड़ा कर देते हैं वो आपको Exactly, कि आप बेटा observe कैमरा करें, में सब देखो. कुछ करें, but you know, putting the hand on there is a big risk. Absolutely. You know? तो ये मुझे सबसे बड़ा फील हुआ कि आप बाहर जाके भी जब तक वो पर्सनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेते, यू डोंट गेट इनफ कॉन्फिडेंस. बहुत सारे हमारे काफ़ी सीनियर्स भी आए, दे हैड द सिमिलर प्रॉब्लम कि यार हम ये सीख के तो आए हैं, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो वी आर हेजिटेंट कि कोई मिस्टेक ना हो, जो प्रॉब्लम ना हो जाए. तो आई वांटेड टू गिव देम कि आप सीखें सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, क्वालिटी वही होगी, बिल्कुल. बट यू गेट टू डू इट योरसेल्फ. Sounds too good to be true, honestly. Yeah. So, like, what kind of students do you usually see in these courses? Are these mostly fresh graduates or undergraduates or senior postgraduates? Well, a lot of Oh, fresh so variety. graduates. Yeah, fresh graduates हैं, residents हैं, mid career professionals हैं, बहुत आपके seniors भी आते हैं. तो a lot of mix. तो उस हवाले से wherever I go there is somebody जिनको हम relate कर सकते हैं. आप हमारे पास तो आते हैं. आपको वैसे किस कैटेगरी में ज़्यादा रिस्पॉन्स नज़र आता है among all these categories at the academy? Well, actually, response की जहाँ तक बात करता हूँ, clinicians, you know, I always encourage जो clinicians हैं जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो आएँ, उनका रिस्पॉन्स भी होता है. और सेकेंड थिंग इज़ कि लोग अक्सर औकात रिसर्च कर रहे होते हैं, बट लोग ट्रेंड्स के पीछे ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, बस हम इसके अलावा कुछ और नहीं है ना. Absolutely. सो आई प्रेफर एजुकेटिंग देम कि ऑप्शंस आपको क्लियर चॉइसेस पता होने चाहिए कि लेसेस अगर कर रहे हैं तो लेसेस इज अ गुड थिंग टू डू दैट. आप उसमें कोई और बंदे ने आज एक रील लगा दी, कोई पोस्ट लगा दी, तो दैट्स नॉट द ओनली थिंग देयर. Exactly. आज से 4-5 साल पहले PRP इन हुआ तो अब सब PRP पर mesosomes तो सब mesosome. So I completely get what you're saying. अच्छा नहीं, my question was by category I mean the teaching categories at Face Academy, which one of these is usually the most full as soon as a course is announced? Oh, among these, laser dentistry, cosmetic dentistry and facial aesthetic, तीनों. अच्छा, all right. They're So all sir, going I want to perfectly understand कि what these courses are like. Are these like C aesthetic or C endo type वो तरह के courses होते हैं, या फिर are they more longer like diploma type courses? अब दोनों पैटर्न्स हमारे पास. Like Right. we have got C aesthetic type courses, just C laser type courses, as well as the 6 months or 1 year long courses. And then alongside that हमारे पास international accreditations भी हैं, जो certifications हमारे यहाँ provide कर रहे हैं. They are at par with international standards. उनका curriculum, उनके credit hours, उनकी जो recognition है, that is at par with the I was international actually body. going to ask that. Okay, once somebody has gotten their like क्या बोलते हैं certificate of completion Yeah, after yeah. completing a course at your academy, then what are their prospects? First of all, I want to understand what skill set do they walk out with, especially when they've done a course in cosmetic surgery or laser dentistry in particular, and then what can they do for themselves with this certification? Okay, so the first thing is your personal skill improvement. You know, आप लेजर इंडस्ट्री की बात करें, फेशियल एक्सेसरीज की बात करें, you are growing professionally. The first thing is that. Second important thing कि when you are applying abroad, आप चाहते हैं, you need to compete with the lot out there. Right. So these international certification, they give you that edge, professional edge, कि आपने सब कुछ सीखा हुआ है, hands on भी किया हुआ है, plus आपकी certification है, that's already by those international associations, Okay. जो आपको edge definitely. दे रहे होते हैं किसी भी job search में, किसी भी आपकी placement के हवाले Absolutely. से. और जो skill set की बात करते हैं, तो say laser industry में the way we have designed it कि हर speciality में lasers का क्या role है. You know, we don't just tell कि यार laser is a magic thing और ये सब कुछ कर देता है. We rather go by the evidence कि हाँ, this is what it can do, this is what it cannot do. Right. ठीक है. सो आप एविडेंस बेस्ड चीज़ को लेकर जब चलते हैं तो इट बिकम्स मोर प्रैक्टिकल. ठीक है. सो लेज़र का सपोज एंडोडोंटिक्स में क्या रोल है, we do that separate module for that. Laser का surgery में क्या role है, we have a separate module for that. Okay. ठीक है? So this is how we divide. So like from all the directions, you cover it from all the directions, so yes. that somebody who then walks out of the room after completing their course in laser dentistry can like answer every question from A to Z about the implementation and utilization of it in the field. That makes total sense. Achha, so about you mentioned that the international accreditations of these courses help somebody establish the credibility and the credibility in their own skill set once they are out there to look for a job, and that makes sense. So can you list down what the accreditations are of these courses? So for laser dentistry, I myself I'm authorized to conduct courses and do the accreditations from American Board of Laser Surgery. So Okay, from the American Board of from the Laser American Surgery Board of Laser itself. Surgery, yeah. For That's short great. courses, they provide a course completion certificate and alongside some credit hours as well. Interesting. From the American Board of Laser Surgery. Then for the facial aesthetics one, we also have the accreditation from CPD UK. Okay, this all is right. this is one of the most I would say reputable body. Yeah. That gives the credit hours for all the UK based Colorado. The credit hours thing is actually pretty cool. Yeah.
Yeah, and then we have got the accreditation from AACME, American Academy of Accounting Medical Education. That is there. They have got food accreditation for all these courses as well. Or then we've got the American Accredited Association. That's also there. So ये 3 4 5 bodies हैं सही, जो आई हमारे थिंक accredited काफ़ी bodies ज़्यादा हैं. हैं, तो Yeah. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ Yeah. सेंस. अच्छा, वैसे यूजुअली इन योर ओन एक्सपीरियंस सो फार, व्हाट हैव द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट फ्रॉम दीज कोर्सेज हैव बीन एबल टू मेड ऑफ themselves? Like, do you usually see them inclining more towards practices, or do you see them then start teaching people among a group of their own? What do you usually observe? Mostly they go into their own practices. जहाँ भी वो practice कर रहे हैं, they are more implementing that knowledge कि पेशेंट्स को डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे होते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट के वाले से. और हमारा प्राइमरली गोल भी यही होता है कि आप प्रोफेशनली जो चीज़ सीख रहे हैं बिल्कुल. उसको आप करके दिखा सकें. सही. So, और mostly बहरान that भी way. इन्हीं डॉक्टर्स का है, बिकॉज अब फॉर एग्जांपल एवरी डेंटल क्लिनिक नाउ अंडरस्टैंड्स दैट इन ऑर्डर टू compete with another dental clinic which is going to be just down the road, they have to become an aesthetic clinic as well. Yeah. लेकिन लिमिटेशन ये है कि जो प्रिंसिपल डेंटिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है वो बेचारा या तो एंडोडोंटिस्ट है या इम्प्लांटोलॉजिस्ट है या प्रोस्थोडोंटिस्ट है, और उसको नहीं आता कुछ भी Exactly, related to skin and exactly, everything. exactly. So that is why then they want to look for somebody who wants to and is able to understand aesthetic dentistry. Exactly. So I think this is where graduates from such academies are very useful, because not only are they planning to pursue their career in aesthetic dentistry, but are like actually well versed in their skills as well. Exactly. When we are enrolling our students, the first time they come to us, so the first thing that I tell them that it's not just a 3 days or 7 days or 6 months course that you're doing. It's like starting a journey with us. You become a part of our, I would say, alumni or colleagues or whatever. So even after 5 years doing the course and you still face a problem, you're stuck somewhere, you're just a text away. Right. Ring us up and we'll be there to help you in that thing. And for that people, they've got confidence. कि हमने ये चीज़ सीखी है, हम अपने क्लिनिक पे ये कर सकते हैं. ठीक है. और उसका उनको हमें हमेशा कोई फीडबैक मिलता रहता है किसी न किसी पॉइंट पे, वी आर डूइंग दिस, कुछ हम कॉम्प्लिकेशंस आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ गाइड कर देते हैं. एंड देन हम उनको साथ साथ कुछ अपडेट्स भी देते रहते हैं कि कोई न्यू जो चीज़ें उसमें इनोवेशन आ रही होती हैं. That's really nice. That's really nice. As well. Acha, in terms of the equipment that is required for such procedures, I want to understand कि is it, for example, if I'm somebody who's establishing my own clinic and want to, I don't want to like overestimate my own skill set, I will hire an esthetician, but I want to understand what basic equipment I should have in order to at least kickstart the program, right? So is that a very overwhelming procedure to understand what kits you need, what? For laser dentistry, you need a laser machine. That's the first thing, Okay. and that's a bit of investment. But if you look at the investment in terms of the returns, it becomes easier to understand. I would say roughly, if you purchase a laser machine, and if you're practicing, reasonably well. I'm not saying the very high-end practice, reasonably well. So you should be able to get the cost back within 1 year. Okay. Yeah. Achha, can you tell me how long would it take for, let's say, a dentist, a principal dentist of some clinic who has to take care of their clinic as well, wants to get enrolled in your academy as well, wants to learn about laser dentistry too. So, like, how can they accommodate themselves over there, and how long would it take for them to generally complete the course? So, for this reason, our courses are mostly weekend-based. Right. So that the 4 or 5 working days they can go on by their own work routine, and for the weekend they have to spare their time to be at the center to do the hands-on practice and take lectures and all. So that's how we have designed it, and this is actually more practical. Right. For all those who are working. अच्छा डॉक्टर वकास, मेरा एक स्लाइटली जो है ना कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है. लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट इट इज़ कमिंग वेरी फ्रॉम डीप विद इन. The question is कि even though your academy, fortunately enough, is one of the academies जिनके बारे में everybody knows, right? But you are also aware that many academies today exist in like every other area of the city, right? So like for somebody who only recently graduated, does not understand the ins and out of courses and academies, etc., how do you suggest somebody chooses the right program and perhaps the right institution for themselves? So for a student point of view, I was to join a program, and I was to select out of 4 or 5 different choices. I would like to know that what that academy is, the content of learning, how is that,
what they're teaching me. Second thing is that how intensive is their coursework on hands-on based, you know. Hands-on It's not based. just lectures, आपने books पढ़ लिया, सारा कुछ आप कर सकते हैं, but जब तक वो आप प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं करते तब तक आपको इनफ कॉन्फिडेंस नहीं आता है. द थर्ड थिंग इज कि फैकल्टी हु इज टीचिंग देयर, यू नो, उनके अपना एक्सपीरियंस उसमें कितना है और वो कितना अच्छा आपको बता सकते हैं. आई डोंट थिंक कि कोई भी अगर एकेडमी खोलता है वो इस नीयत से खोलेगा कि यार आपने मिसलीड करना है, बट द डिफरेंस ऑलवेज कम्स कि कौन कितना कॉम्पिटेंट आपको बना रहा है उन स्किल्स के बाद. ये भी अभी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने मेंशन किया ना कि जहाँ पे भी दुनिया के जिस भी हिस्से में आपकी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप होनी होती है, यू मेक श्योर टू बी प्रेजेंट ओवर देयर. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब जिनके नाम से एकेडमी खुली हुई है उनको तो लोग जानते होंगे, लेकिन फिर वो उनके कोई ABC मॉडरेटर हैं जो आके ले रहे हैं और फिर लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही टॉट. एग्जैक्टली, यहाँ पे क्वालिटी डिफरेंस आ जाता है. बिल्कुल. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि जो एक्रेडिशंस हैं, यू नो, कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं, मतलब दे आर आउट ऑफ नोवेयर, 2 दिन में बन गई, ठीक है, उनकी कोई वो नहीं है. आपको आप ज़रा हिस्ट्री चेक करें कि कौन से इंस्टीट्यूशन उनको वो कर रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे. कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो दे हैव बीन देयर फॉर ईयर्स, यू नो, उनके एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलिएशंस हैं. तो आप ये ज़रूर देखें सर्टिफिकेशन जो बॉडी आपको अवार्ड कर रही है उसकी इट्सेल्फ क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है. सो लाइक मैंने CPD UK मेंशन किया, तो CPD अगर आप गूगल करें तो आपको 10 किस्म के CPD UK के उस पर मिल जाएंगे. बट चूजिंग द राइट वन आउट ऑफ दैट, आप वो चूज़ करेंगे तो आपको एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे. यार दिस बॉडी इज एफिलिएटेड विद किंग्स कॉलेज, दिस इज एफिलिएटेड विद रॉयल कॉलेज, एफिलिएटेड विद दिस मच इंस्टीट्यूशंस, क्वीन मैरी, ब्ला ब्ला, व्हाटएवर इंस्टीट्यूट डिफरेंट. सो आपको क्वालिटी डिफरेंस वहाँ पे नजर आता है. ओके सर, आई हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ फेक अकेडमी विद लाइक इनवैलिड एक्रेडिशंस? The best thing is the claim that they're making. Say for example, they tell you that we are concerned with this board or whatever, so write an email directly to them. Inquire about that. You know? Like if you go onto the CPD UK website and you just write down the name of the face or our academy, they will tell you right away that this is the academy, this is their accreditation number, and these are the courses that they are allowed to conduct, and they are recognized, you know. All right. And if you put in any random name, you're not getting any results. So the best thing is आप directly उनके support पे info पे email करके पूछें that this we have got this course information, so is it actually being offered by you or not? You know, go to the first hand source. Would a board that big actually get back to me? They normally take these things seriously, you know. In fact, we had some situation like that one of or two of our participants, they had a similar course pamphlet resembling our pamphlet, and they thought, ये तो होता होगा definitely. They thought definitely. this is what we are offering, and they emailed that pamphlet to the board ke yaar, are you guys offering this thing? And they again contacted us ke this is not offered by us. So and they then clarified this thing, no, this is not being offered by us, this course is somebody's else. राइट. तो जहाँ तक स्टैंडर्ड बॉडीज की बात आती है वो इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं. अच्छा सर, ये जो एक्रेडिटेशन वाली बॉडीज हैं, ये डू दे कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन दीज कोर्सेज एज वेल एंड द क्वालिटी दैट यू डिलीवर? They definitely do. They definitely do. They always need for a feedback from the participants. कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, कोई पार्टिसिपेंट डायरेक्टली रीच आउट करता है, सो दे ऑलवेज टेक दैट इनटू अकाउंट कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम आता है, क्वालिटी एश्योरेंस में उसको रेक्टिफाई किया जाए. तो दे आर सीरियस अबाउट दीज थिंग्स. एब्सोल्युटली. अच्छा डॉक्टर वकास, मेरा आपसे एक आखिरी सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं. आई वांट टू अ लिटिल बिट अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल कैन, लाइक नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव बिकम obviously, but how other people can, who are actually diving into the entrepreneurial mindset, perhaps not exactly opening a aesthetic academy, but there are a lot of dentists who graduated let's say 6 to 7 years ago and completed their residency, and they even if they have like some sort of fellowship abroad, they feel like they have a skill that they want to be able to teach others, right? How do you suggest somebody like what kind of steps should somebody take in order to eventually start teaching, and if it's not the conventional teaching route, like not in a college or a university, and considering that they cannot just open a high-end teaching institution on their own as well, so like how do you suggest what initial steps they can take? So I would suggest that if you're planning, you've got an international degree and you want to, you know, teach the students over here nationally as well. So you can reach out those institutions who are already open to these options. Like we at the FACE, we welcome all the individuals who want to be a part of the team. You know, and they, for example, somebody has got a specialist in sedation dentistry, you know. It's a new thing over here, relatively new, not a very new thing. But if you are a specialist in that and you want to do some courses with that, you can always reach out to us. And we can give you a planned course. Okay, that this is how we can. So like there's always a collaboration opportunity. There is always a collaboration opportunity. That's incredible. Yeah.
I'm very glad I asked that question because otherwise we wouldn't have explored this part of Face Academy as well. Acha sir, another thing that I want to talk about is because you have experience of teaching so many individuals that were from various skill sets and various modes of their career, right? From as somebody as young as like being a very fresh graduate just out of their house job, very eager to become an aesthetician, to somebody who has been 10 years into this but now wants to change their trajectory. So I want to understand what are some very common mistakes that you see people make when they're trying to move towards laser dentistry or cosmetic dentistry. Very good question. This one I practically faced many times. Initially when I was like in 2014, 2015, when I came back, and there were a few consultants who had lasers at their practice. Machine उनके पास पड़ी थी, और but they were not able to do anything with that. अच्छा. Yeah. So they contacted me. They said कि डॉक्टर साहब हमारे पास मशीन है, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं. But the problem was उसके पीछे लर्निंग या एजुकेशन नहीं थी, एविडेंस बेस्ड नॉलेज नहीं था. उन्होंने खरीद ली, या जो कह लें कि जो वेंडर्स उन्होंने मशीन उनको दे दी और बता दिया डॉक्टर साहब ये बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ये प्रोसीजर हो जाएगा, ये कटिंग करेगी या ब्लीडिंग स्टॉप करेगी. बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क दैट वे, प्लान्ड. Also you need to know how to literally hold it and do stuff. Exactly. So even one of very senior consultant I know, he I think had a degree और कुछ 20 years ago or so इतनी उनकी practice थी. So laser machine उन्होंने purchase की, but he never used that. So when he came to me, he quoted incident कि मैं कोई procedure कर रहा था intraorally और वहाँ पे कोई complication हो गई, कुछ burn हो गया, कुछ ऐसा problem हो गया, तो that made me rethink कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया. तो मैंने लेज़र को पैक करके साइड पे रख दिया और उसके बाद मैंने यूज़ नहीं की. सही. और आपसे सीखने के बाद now I'm opening it after 10 years. Right. ठीक है. और फिर मैंने डॉक्टर वकास को कॉल करी कि सर वो मुझे लगता है कोई मसला हो गया. Yeah, so like he had got the machine before coming to me और प्रोसीजर करके वो किया. तो the first thing कि आप प्रॉपर सीखते नहीं है जब ना आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या बीइंग सीनियर हैं, तो सिर्फ इस पे रिलाई ना करें जो मार्केटिंग कंपनी या जो वेंडर्स आपको बता देते हैं कि ये कर देती है. रादर उसके पीछे आप फिर एक प्रॉपर सीखें उसको इस तरीके से. बिल्कुल. देन यू विल बी एबल टू गेट द प्रॉमिस्ड रिजल्ट्स. कि हाँ मैं कहता हूँ कि ये प्रोसीजर ऐसे होता है, क्यों होता है, यू नीड टू लर्न फॉर दैट. I think that makes total sense because A, you are overestimating your own skill set in a department that you know nothing about, and B, you're underestimating the complexity of that machine that you've bought for like quite a lot of money. ठीक है, that makes a lot of sense as well. Dr. Waqas, I think इसमें एक चीज़ और सॉरी ऐड करना चाहूँगा इसमें. अब वो बिकॉज एक्सपीरियंस में आता है कि आई थिंक अबाउट 7 years ago or so एक इसी तरह से हॉस्पिटल ने मुझे रीच आउट किया कि डॉक्टर साहब वी गॉट अ मशीन और हमें उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं. सो आई वेंट देयर. इट वाज अ वेरी आई वुड से ऑल टिश्यू लेजर मशीन, अर्बियम लेजर थी, ठीक है, व्हिच वर्क्स ऑन सॉफ्ट टिश्यू एज वेल एज द हार्ड टिश्यूज. सो आई हैव प्रैक्टिस ऑन दैट. सो जो नॉर्मली सपोज हम ऑस्टियोटमीज करते हैं, बोन कट करते हैं या कैविटी प्रिपरेशन करते हैं, सो दैट लेजर कैन डू कैविटी प्रिपरेशन एज वेल. Okay. Yeah, it can do the access opening for root canal. Right. Yeah, it can do the crown cutting as well. By 2 birds. Yeah. So, लेकिन वहाँ पे वो मशीन पड़ी है, कॉस्ट 2-3 करोड़ उसकी कॉस्ट है, but nobody knows how to use that. ठीक है. So when I went up, मैंने कहा सर ये मशीन तो है, सब कुछ कर सकती है. कहता है the only thing that जब भी कोई विजिट होता है तो हम इसको ओके करके ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं, इससे आगे कुछ नहीं पता है. ठीक है. तो आई कंडक्टेड अ फ्यू कोर्सेज, थोड़ा सा उनको बेसिक्स मैंने गाइड की कि दिस इज हाउ यू शुड डू दैट, और अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी जगहों पे इस तरह के इश्यूज भी हैं कि मतलब समटाइम्स द गवर्नमेंट डज गिव यू द फंड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इक्विपमेंट एंड ऑल, बट उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे मेंटेन करना है, उसके राइट पीपल नहीं है या आगे ट्रेनिंग नहीं दी गई या वट एवर रीजन, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो ये भी एक इसी तरह का एक इशू आता है कुछ. सर मुझे तो लग रहा है लेजर डेंटिस्ट्री पे FCPS होना चाहिए. वैसे आपने कभी कन्वेंशनल टीचिंग की तरफ जाने का क्यों नहीं सोचा? I am doing conventional teaching as well in visual surgery. So like at PIMS, are you? I'm also faculty of that. Perfect. Challenge, that's great. Going side by side. Sahi hai. That's very nice as well. Dr. Waqas, I think we had a great discussion, and I'm very glad that in perhaps such small amount of time I was able to ask all the questions, and you were very good with your answers. And thank you for correcting me at some places as well. That was very eye-opening. But I do want to ask you one last question before we finally conclude this. So I want to understand the students who are now willing to go into laser dentistry, right? You took a route where because laser dentistry was not
going to be mainstream for quite some time in Pakistan. You took an alternative route as well. Yeah. But even now, when laser dentistry, at least in private practices, has become a necessity, you are right. Yeah. But still, in terms of being able to specialize, one has to eventually move abroad. Yeah. So, like, how do you suggest somebody who does not have the means to do that, has to remain in Pakistan? What can they do in order to kind of specialize themselves to the best of their ability? So the answer to that is that, as I told you earlier, that I'm also working as assistant director with American Board. So I had given them the same proposal, that there are many of the practitioners who want to excel, who want to learn something, but going to US or going abroad, traveling It's and not an lodging option. and all is not the feasibility for everybody, you know. So they give the flexibility that as far as the hands-on component is concerned, ठीक है. your center is recognized for these hands-on practices. All right. The thing is that our faculty will be traveling to Pakistan, okay, and they'll be providing their skill set, lectures, and hands-on trainings and all. And for exams, they have to travel to us. You know, so this is an option that we have available over here. That if anybody wants to excel, specialize from the American Board of Laser Surgery, they can always reach out to me, to the FACE Academy, and they can get themselves enrolled. The hands-on, the theory part, it will all be done in Pakistan. Right. Okay. And when we comes to assessments or the course, case presentation and all, then they have to travel once or twice, and then they can get it done. सर वैसे मैं ये सवाल पूछना नहीं वाली थी, लेकिन now that you have mentioned so many international accreditations to your academy, and I am tempted to ask this, that this all sounds very expensive as a participant. How would you comment on that? As a participant, a little expensive, but abhi I think I evaluate it in terms of कि आपका उसमें gain क्या हो रहा है, you know. आज आपको एक sum थोड़ा सा expensive लगता है, but down the years it gives you an edge जो आपका वो ultimately recover हो चुका And perhaps अगर आप compare करें to the alternate options of specializing in this niche which is going abroad, उसके comparison में तो फिर obviously it's nothing. It's much more reasonable. Yes, much more reasonable. that makes Yeah. total sense. Yeah. Again, thank you so much for your time, Dr. Waqas. It was wonderful talking to you. Yeah. You are a very busy man, and I am very glad that you were able to take time out for this. And I really, I'm very glad that we were able to have like a professional conversation regarding an academy जिसका मैं नाम हर वक्त सुनती रहती थी. Again, I only hope to see more and more students understanding the importance of laser dentistry and cosmetic surgery. And while I know there's a very big cohort that wants to get into this field, it's important that perhaps through platforms like these, we can tell them that there are opportunities where they can enroll Definitely, themselves. definitely. So it was a pleasure talking to you and answering all the questions. I do hope कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने आंसर किए हैं, and still if there is something जो कि आपके unanswered questions हैं, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग reach out कर सकते हैं हमें. That's very kind of you. We'll be glad to help, inshallah. All right. Thank you so much. Thank you. So this was our time with Dr. Waqas Malik. He is the CEO of FACE Academy and generally a very humble person, as you all quite observed yourself. He's always available on his social media platforms to answer any questions and regarding getting enrolled in his academy for any of the courses of it, or about laser dentistry in general. Thank you for watching. Allah Hafiz.